हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द अनदर चैप्टर दैट इज द डिवीजन। और यहाँ पर हम सबसे पहले डिवीजन की फर्स्ट ट्रिक दैट इज डिवीजन बाय 9 एनी डिजिट नंबर। आपके पास कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर हो, इट मे बी 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 6, 7, 9, 10 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का आपके पास नंबर हो, वी कैन इजीली डिवाइड बाय 9 any digit number with the help of this trick. So let's see. Here you can see we have three examples. 245 divided by 9. First step is write the number as it is. Then write the divisor here. And because we have divisor which is a single digit number, so split this number that is a dividend by 1. Like this. Now write the first number as it is, 2 as it is, and next step आपको diagonal numbers को add करते जाना है. Diagonally that means 4 plus 2 is 6 right here, and 6 plus 5 is 11 right here. But 11 is more than our divisor which is 9. We have to subtract this 9 from 11. So subtract 9 from 11, that is 2. यहाँ पर हमने 9 को 1 times subtract किया है 11 से, so that means आपको 1 add करना होगा उससे previous term में, that is 6, 7 and 2. That means 27.2. आप ये भी कह सकते हैं 27.2, या 27 is our quotient and 2 is our remainder when we divide 245 by 9. So this is the trick जिससे आप कितने भी डिजिट के नंबर को 9 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं. So let's see one more example here, that is 8427 divided by 9. First write the number as it is and write divisor here. As divisor is a single digit number, so we have to split this number by 1. Now first step will be same, that is write first digit as it is and then diagonally आपको numbers को add करते जाना है. That is 8 plus 4 is 12. So we have to write 12 here, but 12 is more than 9. So we have to subtract 9 from 12. That is 9 subtraction. That is 3. यहाँ पर आपने 9 को 1 time subtract किया है. That means we have to add 1 in 8. That is 9. Now addition diagonally, that is 3 plus 2 is 5. Again 5 plus 7 is 12. Same here, 12 is more than our divisor which is 9, so we have to subtract 9 from 12. That is 3. यहाँ पर आपने 9 को 1 time subtract किया, so we have to add 1 in 5, that is 6, 3 and 9. That is 936.3 is our answer. That means this is our quotient and split के बाद जो भी आपका नंबर बचता है that is our remainder. Let's see one more example, और जो आपका है 6 digit number, that is 2,14,091, और जिसको आपको डिवाइड करना है 9 से. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कितने भी डिजिट का नंबर हो, आप जो आपका प्रोसेस है, आपकी जो ट्रिक है वो सेम रहेगी when divisor is 9. So first write the number as it is. Then write divisor here and split this number by 1 digit. So first step, write the first number as it is and then diagonal addition. That is 2 plus 1 is 3. 3 plus 4 is 7. 7 plus 0 again 7. And 9 plus 7 is 16. Now 16 is more than 9, so we have to subtract 9 from 16. That is 9 subtraction 7. यहाँ पर आपने 9 को 1 time subtract किया है, तो आपको 1 number 7 में add करना होगा, जो भी आपका previous number है. That is 7 plus 1 is 8, 7, 3 and 2. Now diagonally addition, that is 7 plus 1 is 8. That means 23,787
0.8, या आप ये भी कह सकते हैं कि 23,787 is our quotient and 8 is our remainder when we divide this number by 9. Let's sound another trick for division, that is a flag and the pole division method when divisor is 2-digit number. You can see here we have two examples और दोनों के examples में आपका जो divisor है वो 2-digit number है, that is 73 and 22. तो क्या है flag और pole division method? Divisor में क्या होता है flag और क्या होता है pole? Let's see. First, write the divisor, that is 22, but like this. आपको बेस और पावर के अकॉर्डिंग डिवाइजर को लिखना है. जो आपका पावर है वो है आपका फ्लैग और जो आपका बेस है वो है आपका पोल. जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर डिवाइजर 2-digit नंबर होता है वहां पर आपको पोल को एज ए डिवाइजर यूज करना है. दैट इज आवर डिवाइजर इज पोल. नाउ बाकी का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम है. फर्स्ट राइट द नंबर, दैट इज 5065. राइट द नंबर हियर, दैट इज 22, बट वी हैव टू राइट दिस नंबर लाइक दिस. Split this number by 1 because here we have divisor which is 2, that is a 1-digit number. So like this. Now यहाँ पर आपका जो मेथड है वहां पर स्टेप कैसे करने हैं. सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट को देखना है which is 5. Now divisor is 2. Can we divide 5 by 2? Yes, we can divide. तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, what is our quotient and what is our remainder? 5 divided by 2, that means 2 2s are 4. 2 is our quotient and 1 is our remainder. तो आपको वो लिखना कहाँ पर है? We have to write quotient here, that is 2. Means आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, so 2 2s are 4. This is our remainder and this is our quotient. तो आपको quotient को यहाँ पर लिखना है और जो रिमाइंडर है आपको वो नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है. दैट मींस वी हैव टू राइट दिस वन हियर. लेकिन आपको नेक्स्ट नंबर सिर्फ 1 रीड नहीं करना, इसको कंप्लीट ऐसे रीड करना है. दैट मींस लाइक दिस 1 and 0 like 10. So what is the second step? This is our first step. What is the second step? 10 minus multiplication of flag, that is 2, and previous quotient which is 2. Means आपको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लैग एंड द प्रीवियस क्वोशिएंट. 10 minus 4, that is 6. Now we have to apply same method, that is 6 divided by 4 which is 2. और वहां पर भी आपको क्वोशिएंट को यहाँ पुट करना है और रिमाइंडर को नेक्स्ट डिजिट से पहले. When we divide 6 by 2, we get 3 as our quotient and remainder is 0. तो यहाँ पर आपको 3 राइट करना है which is our quotient and remainder is 0, जो आपको नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है. Now next number is same, that is 0 6. You can say 6 minus multiplication of flag and the previous digit, previous quotient. You can say that is 3 2s are 6. 6 minus 6 0. And when we divide 0 by pole which is 2, we get quotient and remainder both are 0. So 0 here and 0 here. Now what is the fourth step? You can say fourth step is 0 5 is 5 minus multiplication of flag and the previous quotient, that is 0 into 2, 0. 5 minus 0 is equal to 5. And divide by pole which is 2. Now when we divide 5 by 2, that is 2 2s are 4. Same 2 is our quotient and 2 2s are 4 and 1 is our remainder. तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप करना है, you can stop here. तो आपका जो आंसर है वो 230.2 आ जाएगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर चाहिए, सो वी कैन कंटिन्यू. लेकिन आपको कंटिन्यू कैसे करना है? तो आपको यहाँ पर 0 अप्लाई करना है और ऐसे ही आपको 0 अप्लाई करते जाना है.
That means यहाँ पर जो next number है वो 10 है. So let's and do the same process. That is 10 multiplication of flag with the previous quotient. That is 2 2s are 4. 10 minus 4. That is 6 and 6 divided by whole which is 2. और जब हम 6 को 2 से divide करेंगे, that means quotient is our 3 and remainder 0. So we can put here 3 and same remainder 0. तो यहाँ के बाद भी आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और if you want तो you can stop here. So what is our answer? Our answer is 230.23 is our answer when we divide 5065 divided by 22. तो यहाँ पर आपने बिना किसी हेल्प के, बिना किसी कैलकुलेटर मोबाइल के एक्यूरेट आंसर निकाला है, वो भी पॉइंट्स के बाद भी. So let's see one more example here. यहाँ पर भी आपका जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे, लेकिन फ्लैग और पोल चेंज हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर जो डिवाइजर है वो है 73. So first write the number as it is and write this 73 like flag and pole. This is our flag and this is our pole. That means this is our divisor, you can say. So now first write the number as it is and split this number by 1 in the same way. Now you can see यहाँ पर जो आपका 7 है वो आपका डिवाइजर है, पोल है, लेकिन we cannot divide 1 by 7. So we have to take first 2-digit number, that is 15. और जब आप 15 को 7 से divide करेंगे, that is 7 2s are 14. So quotient is 2 and remainder is 1. And we have to write this remainder before the next digit as it below. तो यहाँ पर आपका जो next number है वो है 12. So same process होगा, that is 12 minus multiplication of the previous quotient with the flag, that is 3 into 2 which is 6. 6 divided by whole 7. लेकिन we cannot divide 6 by 7. So आपका जो quotient होगा वो 0 रहेगा और जो आपका remainder है वो 6. That is 67 is our next number like this. Next is 67 minus multiplication of the previous quotient with the flag, that is 300 and 67 divided by 7. So when we divide 67 by 7, our quotient will be, that is 9 7s are 63, 9, and our remainder is 4. So we can put here quotient is 9 and remainder is 4. So what is our next number? Next number is the 46. So we can write here 46 like this and subtract multiplication of 3 with 9. That is 9 3s are 27. Now we have to subtract this 27 from 46. So what will we get? We get 19. Now 19 divided by 4 which is 7. And what is our quotient? What is our remainder? Same process आपका रहेगा यहाँ पर भी. 7 2s are 14. That is 2 is our quotient and 5 is our remainder. In the same way, if you want, you can stop here. And if you want to continue, so we can put 0 here and we can continue this process until you want. So now 50 is here. 50 minus multiplication with the flag and the previous quotient, that is 3 2s are 6. 3 2s are 6, that is 44. And when we divide 44 by 7, what is our quotient? Our quotient is 7 6 are 42. 6 and 2 is our remainder. So अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट या 4 डिजिट चाहिए तो आपको 0 पुट करते जाना है और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मुझे यहीं पर स्टॉप करना है कि डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट नंबर चाहिए, so we can stop here. So now what is our answer? That is 209.26 is our answer when we divide 15,276 by 73. Let's start the another trick, that is a flag and
whole division method, but when divisor is 3-digit number, कि जब हमारे पास डिवाइजर 3-digit नंबर का है तो भी हम फ्लैग एंड होल डिवीजन मैथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. So let's see. Here you can see we have one example, that is 3570, but divisor is 127, which is 3-digit number. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर फ्लैग एंड होल कौन सा है. So first write the number as it is, and we can write this number in two ways, that is 12 raised to power 7 और 1 raised to power 27. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन हमें मोस्ट प्रेफरेंस उसको ही देना है नंबर को जहां पर आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी रहे. So you can see 12 raised to power 7 is much easier calculation than the 1 raised to power 27. So let's see, that is this is flag and this is whole. तो यहाँ पर हम जो divisor ले रहे हैं वो whole, that is 12. So first write the number as it is, same way. Then split this number by 1 and write this 127 like this. तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि आपको नंबर को, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है होल से, which is our divisor here, that is 12. लेकिन it is not possible कि हम 3 को डिवाइड करें 12 से. That means we have to take first 2 digit, that is 35. So first step is 35 divide by 12. So what is our quotient and what is our remainder? Our quotient is 12 2s are 24, that is 2 is our quotient, and remainder is 11. So we have to put our quotient here and remainder here, that is this is 111 is our next number. So we have to write next number as it is, that is 111, and subtract करना है आपको multiplication of the previous quotient, which is 2, and flag, that is 2 into 7, which is 111 minus 14. 111 minus 14, that means 97. So 97 divided by whole, which is 12. Now what is our quotient? When we divide 12 by, so 97 by 12, that is quotient is our 8 and remainder is 1. That is 12 8s are 96. Now put here quotient and remainder 1. So what is our next step? Next step, आपका जो next number है वो 17 है. So we have to write 17 and subtract करना है आपको multiplication of the previous quotient, which is 8, with a flag, that is 8 7s are 70 minus 56. Because 56 is a bigger term than 17 and 56 is also a negative term, so ये जनरल सी बात है कि जो आपका इसका आंसर मिलेगा वो भी एक नेगेटिव टर्म है. नेगेटिव टर्म के केस में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? दैट इज द अल्टर्ड रिमाइंडर. अल्टर्ड रिमाइंडर, दैट मींस वी हैव टू डिक्रीज previous quotient, which is 8 here, by 1, that means 7, and we have to add divisor, which is whole, which is 12 here, in our remainder, that is 12 plus 1 13. So 13 raised to power 7. तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो है 137 माइनस मल्टीप्लीकेशन विद द प्रीवियस क्वोशिएंट, दैट इज 7 into 7. 7 7s are 49. So we have to subtract this number. So what is our answer? Our answer is, that is 8 and 88. 88 divided by 12. So what is our quotient? When we divide 88 by 12, we got quotient is 7 and remainder is 4. So we have to write quotient here and remainder here. So अगर आप चाहते हैं कि आपको डिवीजर आपको डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो we can put 0 here.
Otherwise, we can stop here. So here, next number is 40, and if you want, so you can continue. Otherwise, we can stop here, and this is our answer. That is 27.7 is our answer. So I hope you understood this trick कि हम फ्लैग एंड पोल मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डिवाइजर इज 3 डिजिट नंबर है. प्रोसेस आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के बाद कोई भी नेगेटिव टर्म मिले, वी हैव टू अप्लाई द अल्टर्ड रिमाइंडर हियर, एंड इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस. और अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल्स के बाद सिर्फ आपको एक ही पॉइंट तक आंसर निकालना है, तो यू कैन स्टॉप. Let's start another trick for division, that is the flank and pool division method, but divisor is 4-digit number. We already discussed flank and pool division method for 2-digit number divisor and 3-digit number divisor. So let's see कि अगर हमारे पास 4-digit number divisor है तो कैसे हम flank and pool division method को apply कर सकते हैं. Here you can see 46,781 divide by 1483. That means divisor is 4-digit numbers. Process will be same. First write the number as it is. That is 46,781. First we can write this 1483 like this. That is 14 raised to power 83. That is, this is our flag and this is our pole and divisor also. So now first we can write this number like this. You can see flag and pole both are 2-digit number. So we have to split this number by 2 digit like this. Now process will be same. First we have to take first digit and we have to divide this number by 14, but we cannot divide 4 by 14, so we have to take first 2 digit, that is 46, and when we divide this 46 by 14, our quotient is 3 and our remainder is 4. That means 3 is our quotient and 4 is our remainder. Next is 47. So 47 minus multiplication of previous digit, previous quotient, which is 3, with flag, that is 83 into 3. But you can see here in this question our flag is 2-digit number, तो आपको सिर्फ first digit को, that is 10th place digit को multiply करना है. That is 8 3s are 24. 47 minus 24, that is 23. And when we divide this 23 by our divisor, our quotient is 1 and our remainder is 9. Our quotient is 1 and our remainder is 9. So we have to put this 1 here and remainder here, that is 9. Now next is 98. Next number is 98 minus multiplication of the previous quotient and with flag. But now you can see 83 is a flag which is 2-digit number, तो आपको quotient के भी last के 2 digit लेने होंगे, that is here 31. So 31 multiplication with 83. लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये दोनों ही 2-digit नंबर है, तो आपको वर्टिकली क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके लिखना है. That is 3 3s are 9 plus 8, that is 17. So we have to subtract this 17 from 98. This imply 81, and we divide this 81 by 14. Our quotient is 5. 14 5s are 70, and our remainder is 11. So here we can write quotient 5 and our remainder is 11. That means 111 is our next number. So our fourth step is
111 minus multiplication with the flag, that is 83, with previous quotient, but we have to take last two digits, that is 50. Now crosswise multiplication, that is 8 5s are 40 plus 3, that is 43. So we have to subtract 111 minus 43. When we subtract this number, we got 68. Now 68 divided by 14. 14 is our whole, which is our divisor. That means our quotient is here. Our quotient is 4. That is 14 4s are 56, and our remainder is 12. So quotient is 4 and our remainder is 12. If you want, you can continue this process. That means आप यहाँ पर 0 put कर सकते हैं और इस process को continue रख सकते हैं. Otherwise, we can stop here. So our answer is 31.54 when we divide this number by 4-digit divisor. तो वहां पर जो आपका प्रोसेस है वो सेम रहेगा. सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेना होगा. तो आपको वहां पर प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट 2 डिजिट लेने होंगे क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैग है वो 2 डिजिट नंबर है. Let's start the another trick, that is the altered remainder for the division. क्या है altered remainder और कैसे अप्लाई करते हैं हम डिवीजन के ट्रिक को? Let's see. Altered remainder is a variation जो हम किसी भी डिवाइजर के लिए किसी भी वेरिएशन में यूज कर सकते हैं. So let's see. First is 36 divided by 8. अगर हम 36 को 8 से डिवाइड करते हैं, so what is our quotient and what is our remainder? Find out. 8 4s are 32. That is 4 is our quotient and 4 is our remainder. लेकिन if we want कि हमें अपने quotient को डिक्रीज करना है by 1, तो हमारे रिमाइंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? For example, here 36 divide 8, that is 8 3s are 24 and our remainder is 12. That means our quotient is 3 and remainder is 12. यहाँ पर आपने जैसे ही quotient को डिक्रीज किया है by 1, जो हमारा रिमाइंडर है वो इंक्रीज हुआ है by divisor, that is 8. That is 4 plus 8 is our 12. If I want कि हमें quotient को डिक्रीज करना है by 1, that is 2 here, तो हमें अपने रिमाइंडर में 8 को फिर से ऐड करना होगा. That is 12 plus 8 20. In the same way, अगर हम चाहते हैं कि हमारा quotient 1 आए तो हमारा जो रिमाइंडर है वो होगा 28. That means जैसे जैसे हम quotient को डिक्रीज कर रहे हैं by 1, हमारा जो रिमाइंडर है वो इंक्रीज हो रहा है by divisor, that is 8. तो ये है altered remainder, which is a one variation and we can apply anywhere. लेकिन हम अपने मेथड में कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं. सबसे पहले राइट द नंबर एज इट इज, दैट इज 6,95,432 and write the divisor here 57, but we have to write this 57 in a flag and pole form. That means this is 7, which is our flag, and pole 5, which is our divisor also. Now split this number by 1. In the same thing, आपको method है वो same follow करना है. First we have to take first digit, that is 6, and we have to divide this 6 by 5. What is our quotient after division and what is our remainder? Right. 6 divided by 5, that is 5 ones are 5. 1 is our quotient and 1 is our remainder, and we have to write this remainder before the next digit. Now next number is 19. Same process रहेगा आपका. 19 minus multiplication of the previous digit with the flag, that is 7 ones are 7. That is 19 minus 7, we got 12. 12 को आपको flag से pole से divide करना है. That is 12 divided by 5. तो आपका जो quotient है वो 5 2s are 2 and remainder is also 2. Now 25. Next number is 25. So 25
minus multiplication 2 with flag, that is 14. 11 is our answer. And when we divide this 11 by 5, that is 5 2s are 10. 2 is our quotient and 1 is our remainder. So next number is 40. 40 minus multiplication with this 2 with the flag, that is 7 2s are 40, 0. And when we divide this 0 by 5, 0 is our quotient and 0 is our remainder. So what is the next number? That is 0 3, that is 3. 3 minus multiplication of 0 with 7, that is 0, that is 3. And when we divide this 3 by 5, our quotient is 0. So we can put here and our remainder is 3. That is 32. Now 32. So that is 32 minus multiplication of previous quotient with flag, that is 0, and 32 divided by 5, which is our whole. When we divide 32 by 5, 5 6 are 30. 6 is our quotient and 2 is our remainder. And we can put 0 क्योंकि आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट जितने भी डिजिट चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग 0 को पुट कर सकते हैं. So what is the next step? That is 20. So 20 minus multiplication of the previous quotient, which is 6 here with flag, that is 7. So 6 into 7, that is 42, that is minus 22. So now हमारे पास जो आंसर आया है वो है नेगेटिव, that is minus 22. तो यहाँ पर जब भी हमारे पास प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन के बाद कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर दैट इज अल्टरनेट रिमाइंडर मेथड. तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट रिमाइंडर मेथड को फॉलो करना होगा. कैसे करना है? वी हैव टू डिक्रीज क्वोशिएंट, दैट इज द प्रीवियस क्वोशिएंट, बाय 1. दैट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 6 and we got 5 here. लेकिन आपने जैसे जैसे क्वोशिएंट को डिक्रीज किया है बाय 1 वैसे हमारा रिमाइंडर इंक्रीज रहा है बाय डिवाइजर. दैट मींस हमें इस रिमाइंडर में ऐड करना है डिवाइजर व्हिच इज 5. दैट मींस 2 plus 5 7. दैट मींस 7 and 0 is the next number. So next number is 70 and process will be same. That means 70 minus multiplication with 5 and 7, that is previous quotient with flag, 35, and 35 divided by whole, which is 5. What is our quotient? That is 5 7s are 35 and remainder in the same way 0. तो अगर आप चाहते हो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, and if you want you can stop here and other number will be same, that is 1 2 2 0. मीन्स आपका जो आंसर है वो है 12,200.57. So this is our answer when we divide this number by 57. तो इन द लास्ट हमें जब हमारे पास नेगेटिव टर्म आई है हमें अल्टरनेट रिमाइंडर की हेल्प ली है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो भी नेगेटिव नंबर है वो लास्ट में भी मिले. इट कैन हैपन इन द मिडल आल्सो. दैट मींस आपके पास यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नंबर आ सकता था इन द प्लेस ऑफ 2, इन द प्लेस ऑफ 0. तो भी आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा. दैट मींस आपको प्रीवियस क्वेश्चन को डिक्रीज करना है बाय 1 और उसके रिमाइंडर में आपको डिवाइजर को ऐड करना है. Let's start the another trick for division, that is how can we divide any 3-digit number by a number close to and less than 100. That means जो आपका डिवाइजर होगा वो 100 के आसपास होगा लेकिन वो 100 से लेस देन होगा. For example 98, 97, 96 like this. Let's take some example. Here you can see 435 divided by 98. Our divisor is here 98, which is less than but close to 100. So first step is write the base. Base is 100. Next step is
find out the derivation. What is the derivation? Derivation is the difference between the base and the divisor. When we find out the difference between 100 and 98, that is 2. So 2 is our derivation for this question. Now you can see in 100 we have 2 0. So split this dividend by 2 digits like this. Skip this first and 2 and we can draw a line between this number. So this is the first part and this is the second part. Our quotient is first part, that is 4, and our remainder is addition of second part with the multiplication of the first part, that is the quotient, with the derivation, that is 4 to the 8. Now it will give, that is 43. So 43 is our remainder and quotient is 4 for the first question. Now here you can see second question, that is 632 divide by 94. सेम यहाँ पर भी जो बेस है आपका 100 है, तो आपको सबसे पहले डेरिवेशन फाइंड आउट करना है. So write the base first and then find out the derivation. Derivation is 100 minus 64, that is 6. Now split this number by 2. It is first part, this is second part. Quotient is first part, that is 6, and remainder is second part plus multiplication of derivation and quotient, that is 36. So we can add this number in 32. It will give 68. So 68 is our remainder and 6 is our quotient. So let's take third example here. 898 divided by 93. 93 again close to 100 but less than 100. So same step रहेंगे आपके. First write out the base, then write down the derivation, that is 100 minus 93, which is 7. So now here in the base we have 2 zeros, split this number by 2. So first part 8, second part is 98. So quotient is 8 and remainder is second part plus multiplication of quotient with derivation, that is 8 sevens are 56. Now we add this number, that is 154. लेकिन यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो आपके डिवाइजर से ग्रेटर है, जो पॉसिबल नहीं है. So we have to subtract 93 from this remainder, that is 154 minus 93. It will give 61. So that means आप जो आपका रिमाइंडर है वो आपका 61 है. यहाँ पर आपने डिवाइजर को 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया है 154 से. So that means आपको 1 को ऐड करना होगा in our quotient. So that is 9 is our quotient and remainder is 61 after the division. Next one is 908 divided by 97. So same step होंगे आपके. जो base है वो है आप 100. Again derivation is 100 minus 97, that is 3. Split this number by 2. First part, this is the second part. First part is the quotient, which is 9, and the second part is 08, which is equal to 8, and sum, that is a sum, addition sign, multiplication with the quotient with the derivation, that is 9 3 is a 27. So now when we add, it will give 35. So our remainder is 35 and our quotient is 9. Let's start the another trick, that is the digit sum check. Digit sum check बहुत ही small trick है और small होने के साथ साथ ये competitive exam के point of view से काफी important है, क्योंकि किसी भी competition में आप अपने बिना किसी calculator के आप check कर सकते हैं कि आपका answer correct है. So let's see what is the trick. Here you can see we have 4 numbers, that is the 86, 368, 4969, 43,670. आपको इस ट्रिक में सबसे मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है
कि आपको ना तो 9 को ऐड करना है ना ही 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप किसी भी डिजिट सम में अगर 9 को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो आपको 9 को ना तो ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करने हैं हमें डिजिट को ऐड? सो हियर यू कैन सी वी हैव टू डिजिट नंबर 8 and 6. So first we add 8 plus 6. It will give 40. Now 1 plus 4. यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, that is equal to 5. So 5 is the digit sum of 86. In the same way, second one is 368. Here we have 3 digit, तो आपको इन तीनों डिजिट को ऐड करना होगा, that is 8. Now you can see 3 plus 6 9. So we can cancel here 9 क्योंकि 9 को ऐड करने से आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, तो that means this is the 8. It is our answer. Next is 4969. So आप यहीं पर 9 को skip कर सकते हैं क्योंकि 9 को ऐड करने का मतलब ही नहीं है, and 4 plus 6, that is 4 plus 6 is equal to 10. When we add 1 plus 0, this is equal to 1. Next one is 43,617. In the same way, when we add 6 and 3, that is 9, तो आप इसे कैंसल कर सकते हैं और बाकी सभी टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं, that is 4 plus 1 5, 5 plus 7, that is 12. Now 1 plus 2, that is 3. So 3 is the digit sum of this number. तो आप सिंपल डिजिट को ऐड कर सकते हैं और 9 को स्किप कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमें इस डिजिट सम को हम कैसे एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को चेक करने के हिसाब से। सो यू कैन सी हियर वी हैव 432 एंड 459। हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। सो फर्स्ट डायरेक्ट ऐड, दैट इज 9 plus 2 11, that is 1 as a carry, 5 plus 3 8 plus 1 9, then 4 plus 4 which is equal to 8. Now, what is the trick? First, we add the digit sum of this number, that is 4 plus 3 plus 2. That is 4 plus 3, 7 plus 2 is equal to 9. In the same way, we can skip this 9. We have 4 plus 5. It will give 9 again. So we can, this 9 also cancel. So this is equal to 0. You can say it will give 0. In the same way, when we add the result, that is 9 cancel, 8 plus 1, again 9. So we can cancel this. तो यहाँ पर भी आपको 0 मिला है आंसर में और यहाँ पर भी आपको आंसर में 0 मिला है। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल है तो इसका मतलब आपका जो एडिशन है वो करेक्ट है। आप इस मेथड को, डिजिट सम को किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है। आपको सबसे पहले सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर का डिजिट सम करना है, साथ ही साथ टर्म्स का डिजिट सम करना है। अगर डिजिट सम दोनों साइड्स के इक्वल आ जाते हैं, दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स वन मोर एग्जांपल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। यू कैन सी हियर 65 मल्टीप्लाई 65। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, वो आपको 65 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं वैदिक मैथ की ट्रिक। नाउ 65 and 65. So what is the trick? First multiply 5 into 5, that is 5 5s are 25, and then we can take 6 and 1 term, 6 and 1 more than 6, that is 7, 6 7s are 42. So this is the multiplication. So now we can put here, this is the multiplication which is equal to 4 2 2 5. Now you can see the multiplication is equal to this. So हमें चेक करना है कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ डिजिट सम। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिजिट सम करते हैं, दैट इज 6 plus 5। सेम मल्टीप्लिकेशन का आपको साइन सेम रखना है, 6 into 5, sorry 6 plus 5. 6 plus 5 is equal to 11. Again 1 11. When we add both these number, it will give 2. It will give 2. That is 2 2s are 4. तो अगर जब आपने
लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेशन किया, डिजिट सम किया, यू विल गेट 4। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। 4 + 2 + 2 + 5, हमें डिजिट सम करना है। 4 + 5 it will give 9, so we can cancel it. Now 2 + 2 it will give 4. तो आपके जो दोनों के दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है, so that's why जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है that is 4225 वो आपकी करेक्ट है। तो देखा आपने, डिजिट सम से आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को चेक कर सकते हैं कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं। I hope you understood this trick. Thank you. Have a nice day. Bye bye.